फ्रेंड, आज हम लोग द हिंदू का 15 जून 2020 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द चाइना इंडिया पाक एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। सेकंड है अनलॉकिंग वार हिस्ट्रीज विथ अ पर्पस। थर्ड है फॉर ओमान मेरीगोल्ड फ्रॉम अ फ्लोटिंग राफ्ट। फिर फोर्थ है यूरोपियन यूनियन रिजोल्यूशंस पुट स्पॉटलाइट ऑन श्रीलंका राइट सिचुएशन। फिर फिफ्थ है गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग लैप्सेस इन नागालैंड बैट स्टडी। सिक्स्थ है UNORC इज टेलर्स मेड फॉर माइग्रेट। फिर लास्ट में हम लोग प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला आर्टिकल जो कि चाइना इंडिया पाक एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम सिप्री है, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ईयर बुक 2021 के अनुसार जो एक्सेस द करंट स्टेट ऑफ armaments disagreements and international securities. 9 nuclear armed states possess 13,080 nuclear war weapons at the starts of 2021, decrease from 13,400 in 2020. USA, Russia and UK, France, China, India, Pakistan, Israel and North Korea increase in nuclear weapon deployed with operational focus 3825 in 2021 from 3720 in 2020. Nearly 2,000 in the state of high operational alert, most of which belong to the Russia and USA. Russia and the USA together possess about 90% of the global nuclear weapons. UK integrated review of security defense deployments and foreign policy 2021 raised the ceiling for nuclear weapons from 180 to 260. China modernizing the and expanding its nuclear weapon inventories. India, Pakistan, North Korea expands their nuclear arsenal. तो अभी जो ग्लोबल इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो वेपन्स का इंपोर्ट कर रहा है वो सऊदी अरब है, सेकंड में इंडिया है, थर्ड में इजिप्ट है, फोर्थ में ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ में चाइना है। और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए है, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर रसिया है, फिर उसके बाद फ्रांस है, फिर उसके बाद जर्मनी है, फिर उसके बाद चाइना है, ठीक है, फिर यूके। तो इंडिया के पास कितना न्यूक्लियर वॉरहेड है? तो 90 के अराउंड है। पाकिस्तान के पास 165 है, नॉर्थ कोरिया के पास 40 to 50 है एंड चाइना के पास 350 है, फ्रांस के पास 10 है और यूके के पास 120 है, रसिया के पास 1625 है, यूएसए के पास 300 है, ठीक है। फिर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री क्या बोलता है कि एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च into conflict armaments arms control and disarmaments established in 1966 based in Stockholm. Vision क्या है? A world in which the source of insecurity are identified and understood, conflicts are prevented, resolved and peace is sustained, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है
कि as per the latest report of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), which of the following country is the lead importer of a major arms during 2016 to 2020? तो ये सऊदी अरब है बी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द अनलॉकिंग वार हिस्ट्री विथ अ पर्पस। तो इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशंस, एंड जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन अ वेरियस सेक्टर। जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरियाज, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज। न्यूज क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया approved policies on archiving declassified and complications of histories of war and operations. Policies initiatives purpose क्या है? Timely publications of war histories give people an accurate account of the events, provide authentic materials for academic research and counter the unfounded rumors. Each organization under the Ministry of Defense transfer the record history division. फिर उसके बाद उसको पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 एंड पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिक्लासिफिकेशंस ऑफ द रिकॉर्ड्स रेस्ट विद द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। हिस्ट्री डिवीजन क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद द वेरियस डिपार्टमेंट। पॉलिसी मेजर क्या लेना है कि रिकॉर्ड be classified in 25 years. Record older than 25 years be evaluated and compiled by archival experts, then transferred to the National Archives of India. Formations of the committees headed by the Joint Secretary, Ministry of Defense, along with other representatives for the complications of a war operation history. ठीक है। सजेशन फॉर डिक्लासिफिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वार हिस्ट्री क्या क्या है? कारगिल रिव्यू कमेटी, जो कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ हैविंग वार हिस्ट्री रिटन विद क्लियर कट पॉलिसीज। फिर उसके बाद एन वोरा कमेटी, जो कि मेजर टू एनालिसिस लेसन्स लर्न एंड प्रिवेंट फ्यूचर मिस्टेक्स। नीड फॉर डिक्लासिफिकेशन, नीड क्या है डिक्लासिफिकेशन का? तो हेंडरसन्स ब्रुक रिपोर्ट्स बोलता है इन 1962 वॉर विथ चाइना टॉप सीक्रेट्स करंट नॉलेज ऑन हिस्ट्रीज रिलेटेड टू 1962 wars are not considered credible. ऑपरेशंस पवन, जिसके तहत ऑपरेशन ऑफ IPKF the research no access to record of decisions. Exercise brass tacks pave the way for the transformations of the Indian war fighting doctrines, released only on oral reconciliations. Challenges क्या है कि fusion of political directives and strategic decision making, operations and tactical happenings on the ground. Compilations, reconciling and analyzing of the events at multiple levels. Team of dedicated research historians, academics and practitioners with access to the record of the files, merging the concurrent oral histories and designations of all archival complications. वे फॉरवर्ड क्या है कि रोबस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विथ एकेडमिक कम प्रैक्टिशनर्स टू पुट टुगेदर हिस्ट्रीज। ठीक है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि द इमर्जिंग पावर शुड मूव फॉरवर्ड विथ
reforms adjoining a big picture in mind. अब इससे रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अप्रूव अ पॉलिसीज ऑन आर्काइविंग declassifications and complications of histories of war and operations. In this context, examining the policy implications on the external and internal security of the countries. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल्स अबाउट द फॉर द ओनम मेरीगोल्ड्स फ्रॉम अ फ्लोटिंग राफ्ट. तो इससे रिलेटेड प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पूछ सकता है. जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द पॉलिसीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है मेजर क्रॉपिंग्स पैटर्न्स इन वेरियस part of the country's different type of irrigations and irrigation system. तो hydroponics productions method where the plants are grown in a nutrient solution rather than a soil. Floating agriculture, a kind of hydroponics aimed at adapting to the prolonged flooding, employs beds of rooting vegetation composed of a crop growth. Bed float on the surface of the waters, areas of the land suitable for agriculture within the waterlogged regions, mainly used in the area where the agricultural land is submerged for a long period. ठीक है, इसके लिए बांग्लादेश में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये सब चीज़ बताया हुआ है यहाँ पर. फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इम्पैक्ट ऑन इंक्रीजिंग सैलिनिटी is unclear, mainly suited only short duration crops. Water bed degrades within 45 to 60 days, encourage insects and rodents infections. तो इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग एग्रीकल्चर. पहला है कि फ्लोटिंग एग्रीकल्चर कैन बी यूज्ड इन एरिया वेयर द एग्रीकल्चर land is submerged for a long period. बिल्कुल सही है. In this method water ancient and invasive weeds is used as a bed for growing the plant. बिल्कुल सही है. तो करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ 1 and 2 सी हो जाएगा आपसे. फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द European Union resolution put the spotlights on Sri Lanka rights situation. तो यूरोपियन यूनियन जो कि पार्लियामेंट अडॉप्ट्स अ रेजोल्यूशन टू कंसिडर द टेम्पोररी विड्रॉल ऑफ द जीएसपी generalized system of preference status given to the Sri Lanka. ठीक है, instituted in 1971 under the aegis of the UNCLAD. ठीक है, created trading environments for developing countries. 13 countries grant GSP preference. They are Australia, Belarus, Canada, European Union, Iceland, Japan, Kazakhstan, New Zealand, Norway and Russia, Federation, Switzerland, Turkey and United States of America. Objective क्या है कि helping the developing countries, particularly the least developed countries, increase the utilization of the trade preference, promotes productive capacity development and increase trade, raising awareness and understanding in beneficiary countries. Understandings
of technical, administrative regulations and laws of the preferential market. European Union GSP क्या है कि removes import duties on products coming from the vulnerable developing countries, help developing countries to alleviate poverty and create jobs based on the international values, labor and human rights. ठीक है. European Union offers GSP in a different forms. Standard GSP and GSP plus trade supports. Standard GSP, generalized system of preference, provides for the party practical, partial and fully removal of the custom duties on 2/3 of the tariff lines offered for low and low middle income countries. GSP plus system, a special incentive agreement for sustainable development of the and the good governance, reduce the import tariff to 0% for vulnerable low and low income countries. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो प्रीलिम में पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is instituted under the aegis of United Nations Conference on Trade and Development. बिल्कुल सही है. At the present, only the member of G7 countries generalized system of preference. नहीं, 13 countries दे रहा है. ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है यानी कि बी हो जाएगा इनकरेक्ट. फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट द गवर्नमेंट रिपोर्ट फ्लैग लैप्सेस इन नागालैंड बैट स्टडी. नागालैंड में बैट स्टडी हुआ है. इसमें सेफ्टी मेजर्स दैट नीड टू बी taken in a lab system which handling the and bioprocessing the research. ठीक है, इसके बारे में बताया गया है. ठीक है, और वो बोला कि बैट्स मतलब कि ज़्यादा मतलब कि वायरस को कैरी करता है. ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेंस में कुछ इस पेपर 2 में क्वेश्चन हो सकता है कि बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटीज हैव बीन ब्रॉट टू लाइमलाइट विथ रिसेंट डेवलपमेंट. डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ बोथ सिक्योरिटी एंड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, फिर माइग्रेंट का डेटा देना है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सेंटर को बोला है, आदेश दिया है माइग्रेंट का डेटा देने के लिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर चुका गया है. ठीक है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.